हेलो नॉलेज सीकर्स, वेलकम बैक टू द करंट नॉलेज चैनल। मैं जीनल आज आपके साथ डिस्कस करूंगी 5 जून से जुड़े करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स की पीडीएफ फाइल आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन 1। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून, डी 4 जून एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 4 जून। Every year on June 4th, the International Day of Innocent Children Victims of Aggressions means International Day of Innocent Children Victims of Violence around the world. The day reflects the commitment of the United Nations to protect the rights of children. The day is celebrated around the world to acknowledge the pain caused to children who have suffered physical, mental, and emotional abuse. Question 2. Who has taken over the new CMD of National Fertilizers Limited? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शंस आर ए वीएन दत्त, बी उदय कोटक, सी सीबी जॉर्ज, डी नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वीएन दत्त। Virendra Nath Dutt, the marketing director of National Fertilizers Limited, has been given the additional charge of chairman and managing director of the company. He will replace Manoj Mishra. Question 3. Who has released the 1 year of Modi 2.0 e-booklet? 1 year of Modi 2.0 ई-बुकलेट का विमोचन किसने किया है? ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। An e-booklet titled 1 Year of Modi 2.0 Towards a Self-Reliant India has been released by the Ministry of Information and Broadcasting. The e-booklet highlights the achievements of the second term of the Modi government. It marks the first anniversary of the government's second term. Question 4. How many crore dairy farmers have been launched by the Government of India for the किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन? भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आर ए 1 करोड़, बी 1.35 करोड़, सी 1.5 करोड़, डी 1.75 करोड़ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1.5 करोड़। The Government of India has launched a campaign to provide Kisan Credit Card to 1.5 crore daily farmers. Under this campaign, the Government of India will provide Kisan Credit Cards to 1.5 crore daily farmers within the next 2 months from June 1st to June 31st. The Kisan Credit Card will be provided to dairy farmers associated with milk unions and milk producing companies. Question 5. Basu Chatterjee has passed away recently. Who was he? हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? ऑप्शंस आर ए ऑथर, बी एक्टर, सी सिंगर, डी पॉलिटिशियन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एक्टर। Legendary filmmaker and National Film Award winner Basu Chatterjee passed away. He was known for films like Choti Baat and Rajnigandha. Apart from this, he also directed 2 famous TV series, Vyomkesh Bakshi and Rajni.
Question 6. Who was Twitter appointed as the new chairman of board who was also the former CFO of Google? ट्विटर ने किसको बोर्ड का नया अध्यक्ष किस नियुक्त किया है जो गूगल के पूर्व सीएफओ भी रह चुके हैं? ऑप्शंस आर ए पैट्रिक पिचेट, बी ओमिट खुर्दिस्तानी, सी जैक डोर्सी, डी नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पैट्रिक पिचेट. Twitter has appointed former Google Chief Financial Officer Patrick Pichette as the new chairman of its board. He will replace Omid Kordestani. Pichette joined Twitter's board of directors in 2017 and was a key independent director since late 2018. Prior to this, he served as a Google CFO from 2008 to 2015. This will be the first time in the history of Twitter when an outsider presides over the board. Question 7. Who has taken over as the president of CII? CII के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शंस आर ए VN दत्त, B उदय कोटक, C CB जॉर्ज, D none of these. And the correct answer is option B उदय कोटक. Uday Kotak, MD and CEO of Kotak Mahindra Bank, has taken over as the president of Confederation of Indian Industry for the year 2021. He has been replaced by Vikram Kirloskar, President, and MD Nituki Kirloskar System as the president of CII. Question 8. Who has been appointed as the new chairman of BAFTA? बाफ्ता के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए सुशील कुमार, बी गायत्री कुमार, सी कृष्णेडू मजुमदार, डी नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कृष्णेडू मजुमदार. Emmy Award winning television producer Krishnendu Majumdar has been appointed as the new president of British Academy of Film and Television Arts. He is the first black person to be elected as the president of BAFTA in the 73 years history of BAFTA. He will replace Pippa Harris, who will now continue serving as deputy chairperson. Question 9. The United States has issued an order seeking suspension of flights from which nation? संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक आदेश जारी किया है कि किस राष्ट्र से उड़ानों को निलंबित किया जाए? ऑप्शंस आर ए रशिया, बी चाइना, सी इंडिया, डी फ्रांस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चाइना. The United States issued an order on June 3, 2020 seeking suspension of passengers flights from China starting from June 16. The move has been taken in retaliation to China's refusal to let US airlines resume flights to China. Question 10. Which nation will host the Global Vaccine Summit? ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी इटली, सी यूके, डी यूएस. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूके. India is set to participate in the Global Vaccine Summit along with over 50 countries and organizations. The UK-led virtual Global Vaccine Summit will be hosted by British Prime Minister Boris Johnson on June 4th. Question 11. Which two countries are involved in the implementation of the Kohala hydroelectric power project? कोहाला पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन में कौन से दो देश शामिल है? ऑप्शंस आर ए इंडिया एंड चाइना, बी इंडिया एंड पाकिस्तान, सी पाकिस्तान एंड चाइना, डी इंडिया एंड बांग्लादेश. And the correct answer is option C, Pakistan and China.
An agreement was signed between China and Pakistan to implement the Kola hydroelectric power project in the region of Pakistan-occupied Kashmir. The project is being implemented under the China-Pakistan Economic Corridor. Question 12. Which city will host the 51st annual summit of the World Economic Forum? कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? Options are A. Seoul, B. Davos, C. Berlin, D. Sydney. And the correct answer is option B. Davos. The 51st annual summit of the World Economic Forum will be held in Davos, Switzerland under the theme The Great Reset. The summit has been named as a unique twin summit. Thanks for watching. Subscribe our channel for more updates. Thank you and bye bye.